Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe. It's a green morning and it's a green afternoon and it's a green evening. Every day at 8 p.m. Indian Standard Time, we all join together for the new journey, for the new thoughts, for the new vision, and the new positivity which we have to put and we have to bring in everybody. We are talking nowadays about tourism, and today let's take the journey onward in our travel and tourism industry. And we are talking about our book, which we had launched last year on 5th of October, the World Teachers Day. And that book basically has got 15 chapters, which all the academicians can make use of, all teachers can make use of, counselors, coach, trainers, and students, research scholars. Whatever level you are, whether you're in school or college or university, wherever you are, you can take care of it. And this evening, we have got the first participant who has joined us is Madam Vidhi Jaiswal. We extend her a very warm welcome. Today's topic in the Rethinking Tourism ebook, Chapter 11, we are going to talk about community-based tourism and social entrepreneurship. So, ladies and gentlemen, hearty welcome to all of you, each one of you. Thank you very much for joining us, and thank you very much for being a part of the, daily deliberations. Our chamber is a link between India and our brothers and sisters. Those are called NRIs, non-resident Indians. Those have gone abroad. We also extend a very hearty welcome to Madam Sakshi Chauhan from Uttarakhand, and also Mr. Mohit Chaudhary, all the way from Pathankot, and other dignitaries, those are joining us. So hearty welcome on behalf of International Chamber for Service Industry. When we talk about service industry, here is the constituent sectors of service industry. Here's the complete canvas of the service industry. Depending on your interest, what you are interested about, airline services, travel and tourism services, hotel, hospitality, health, wellness, spa, medical tourism, and then you've got media, entertainment, you've got leisure services, retail services, public relation, advertising, and MICE. That's your meeting, incentives, conferences, and exhibition services, financial services, IT and IT-enabled services, BPO, KPO, LPO, telecommunication, housing and infrastructure, real estate, construction, transportation, sales and marketing, office administration services, HR and consultancy services, education, counseling and research services, distribution services, professional services, agro-related services, post-manufacturing services, and there are huge range of services which you all can get. We also extend a very warm welcome and a very hearty welcome along with Vidhi Jaiswal ma'am to Julie Subba ma'am as well from the northeast part of India. These are our regular visitors and they are very, very keen to support, strengthen the vision. So welcome to Visit India year 2023, Incredible India, the land of incredible experiences awaits you. And here is the Honorable Union Minister for Tourism, Culture and MDonor, that is Ministry of Development of Northeast region. Today's program is going to be very interesting, ladies and gentlemen. I'll flip through some slides. We'll have a musical journey and I'll be taking you to beautiful state of Arunachal Pradesh as well in the Northeast. And we will be talking about music festival as well. And then we will take on the journey. India is also hosting this year G20, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. We all got to understand that. And at this moment when we are talking to each other, 7th to 9th of March, that is today, 9th of March, there's an ITB Berlin festival, like you have got World Travel Mart, Earl's Court, London. This is in Germany, International Travel Bosch, that is, which takes place in Berlin every year in the month of March. And this is taking place, and a large number of participants which have gone from India to participate in the India Pavilion, including travel trade, travel agents, tour operator, airlines, hoteliers, National Council for Hotel Management and Catering Technology, and of course,
When you talk about Vande Bharat, when you talk about tourist trains, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, they are also participating right over here in this particular event. When we talk about tourism during the pandemic, there was a new slogan, new vision given by Honorable Prime Minister, Incredible India. Along with that, he told, Dekho Apna Desh. And lots of people were encouraged to travel at least 15 places in India. Now, what all tourism comprises of? We are interested to get foreign tourists also, inbound tourists also. Inbound tourism we want to increase. So foreigners when they come to India, वो क्या देखना चाहते हैं? उनका क्या दिल करता है? हाँ, अगर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, ट्रेड फेयर के लिए आए हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, तो वो 5-star होटल में जाना चाहेंगे. But otherwise they are interested to see real India, authentic India, rural India, because India is so vast and so beautiful. So आज हम चैप्टर 11 की बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रीथिंकिंग टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक, कि पैंडेमिक के बाद हमारा टूरिज्म कैसे होना चाहिए, हम उसको कैसे पैकेज करें. सो योर वोकेशनल एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, if you are innovative student and teacher, this book is for you. Rethinking Tourism Post-Pandemic. And today we move with the chapter 11, Community-Based Tourism, Social Entrepreneurship. अब देखिए, दो हिस्सों को जोड़ा गया है. हमारी कम्युनिटी है, तो उसके ऊपर जो बेस्ड टूरिज्म है, वो कैसा है, उसके क्या फायदे हैं, वो क्यों होना चाहिए, और उसी के साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स, they are having their livelihood also, but they're doing social service, they're doing social entrepreneurship. That also we all have to realize and we have to understand. Chapter 1 में हमने आपके साथ tourism products को share किया था, and you know what we have told you? Refocus, reboot, revive, survive, thrive. All that has to be done over here. That was something amazing which we discussed with all of you. Chapter 2 के अंदर we discussed what is the impact of the COVID-19 on tourism industry. Chapter 3, repackaging tourism post-pandemic times. Chapter 4, public and private sector initiative for tourism recovery in India in the post-pandemic times. Then we came to chapter 5, new normal in Indian hospitality industry post-pandemic. Hotel industry plays a very, very important role, ladies and gentlemen, because everybody wants to have organic food, something authentic food, which is good for my body, my health, my wellness. Then we came to chapter 6, reviving aviation industry post-pandemic. किस तरीके से दोबारा से aviation sector उभर कर आए. Then we came to new norms in tourism, vocational education. We discussed in chapter 7. Then we came to chapter 8, tourism technology revolution post-pandemic. Those of you, those are interested about technology, please go to the 1st March 2023 webinar number 1831 webinar, and you will be able to know everything related to over there. Oh my God, Vidhi ma'am has written a very big kind of post over here on the YouTube. Let me read. Tourism creates jobs, strengthens the local economy, contributes to local infrastructure development, and can help to conserve the natural environment and cultural assets and traditions. Thank you. Thank you very much for that post. Okay. Thereafter, we came on 2nd March to niche tourism, untapped potential in India. उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया इनबाउंड टूरिज्म, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज. इसको 2 हिस्सों में किया था. We are done on 6th of March and we are done on 7th of March, because inbound tourism is very important. Foreigners आएंगे, foreign exchange लेकर आएंगे, हमारा infrastructure use करेंगे, हमारे culture को देखेंगे, हमारी सभ्यता को समझेंगे, हमारी art, craft, handicraft, souvenirs, इन सब को लेकर जाएंगे, हमारा dance, हमारा music, हमारा cuisine, हमारे पहाड़, हमारी नदियां, नाले, सब कुछ, whatever we have got, we package it so beautifully. Julie ma'am is also posting, traveling tends to magnify all human emotions. Wow, that's a very powerful sentence. Julie ma'am, do write to me later on this particular sentence. I would like to use it somewhere because I am not noting down right now. That is, traveling tends to magnify all human emotions. Wow, that's great. So
Today we are on chapter 11. That's on Thursday, 9th of March. So चलिए इकट्ठे चलते हैं रीथिंकिंग टूरिज्म ई बुक के लिए। इसके बारे में ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई बुक को आप हमारे वेब पोर्टल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप आकर वहां जुड़ सकते हैं। सो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? कम्युनिटी क्या है? जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, एक जैसे सोशल नॉर्म्स के, एक जैसी बिलीफ के, एक जैसे कल्चर के, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। तो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म क्या है? और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीथिंकिंग लोकल। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि भारत जो है वो गांव में रहता है। और अगर आपको याद हो, अगर आप नहीं भूले, प्रोफेसर सी के प्रहलाद, अगर किसी ने उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं जिंदगी में। अगर भारत को समझना है, भारत की अर्थव्यवस्था को समझना है, भारत की इकोनॉमी को समझना है, भारत की रूरल इकोनॉमी को समझना है, तो आपको प्रोफेसर सी के प्रहलाद जी की किताबों को यूट्यूब पर जरूर देखना होगा। उनके प्रोग्राम्स को देखिए, तब आपको आइडिया होगा कि सी के प्रहलाद जी ने क्या कहा, कि किस तरीके से इंडिया स्टिल इज रूरल एंड हाउ डू वी बेसिकली एम्पावर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रूरल सोसाइटी। जब एक बार आप रूरल डेवलपमेंट कर दोगे तो दिल नॉट बी ए माइग्रेशन ऑफ लेबर। फिर लोग अपना गांव छोड़कर सिटी नहीं आएंगे। जो सुविधाएं आप शहर में दे रहे हैं, गांव वालों को भी उसी तरीके की बैंडविड्थ दे दीजिए, उनको कंफर्ट दे दीजिए, टेलीकॉम सर्विसेज दे दीजिए। टेक्नोलॉजी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल ऑफ अस। अंत में अल्टीमेटली जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो मुझे कहता है, मुझे सही भारत दिखाओ, असली भारत दिखाओ, छुपा हुआ भारत दिखाओ, स्पिरिचुअल भारत दिखाओ, ऑथेंटिक भारत दिखाओ, और मुझे रूरल इंटीरियर भारत दिखाओ। सो व्हाई नॉट टू पैकेज द कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। और इसके अंदर आपकी लोकल फार्म हाउसेस भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, कल्टीवेशन भी है, फील्ड्स भी हैं। आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, उनमें भी लोग जाना चाहेंगे। ऑर्गेनिक खेती है, लोग खुद से चाहेंगे कि हम खुद वेजिटेबल को उखाड़ें, उसको धोएं ट्यूबवेल के नीचे और उसको खाएं। जो गांव का गड्ढा है, जिसके आगे दो बैल लगे हुए हैं, करके हिच हिच हिच, you know, like that, you go with that. So they would like to go for, or something very interesting, you should name the country. एक ऐसी country भी है, when you are milking the cow, you know, जब आप दूध निकालते हैं गाय का, तो वो लोग वहां एक म्यूजिक बजाते हैं, आपसे $10 चार्ज करते हैं, और गाय म्यूजिक के साथ हिलती है, और वो फॉरेनर सीखते हैं कि गाय का दूध कैसे निकालना है। कैन यू इमेजिन? दैट इज ऑल्सो a rural tourism, authentic tourism, and a wonderful tourism. That is something which we all have to understand. What is community-based tourism? अब community-based tourism में क्या आ जाएगा? सबसे पहले गांव वालों को मिलके, सबको इकट्ठे, उस कम्युनिटी को, अपने लोगों को इकट्ठे करके उन सबको एक प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग करने के बाद उनको एक डिसीजन लेना होगा, जो लोकल कम्युनिटी है। और फिर उसके बाद जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको मैनेज करना होगा। बिकॉज टूरिज्म एज ए टूल इज वेरी पावरफुल फॉर एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। किसी भी जगह की, जैसे आपको पता है कि माननीय जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि आप एयरपोर्ट जहां बना देंगे, वहां की इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर आ जाएगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचूं जहां भी मैंने जाना है। तो टूरिस्ट क्या देखना चाहता है? दे आर नॉट लिमिटेड, ओनली टू द रूरल विलेजेस, कि जाके गांव में ठहर गए। नो, दे आर इंटरेस्टेड टू सी लोकल लाइफस्टाइल। पुराने जो हमारे दूर तक के गांव हैं, वहां का नेचर सिस्टम क्या है, वहां फूल कैसे हैं, वहां जंगली जानवर कैसे हैं, वहां एडवेंचर के ट्रेल्स क्या हैं, वहां की अपनी खुशबू क्या है, ऑर्गेनिक फूड क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। उस सब चीज को जब हम लेकर चलते हैं, लोकल पीपल शेप देयर ओन फ्यूचर। इस सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखें, जो टूरिज्म पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो लोकल लोग हैं, जो कम्युनिटी है, दे शेप देयर ओन फ्यूचर।
That is something very important which we all have to understand. अब देखिए, जब हम डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की बातचीत करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हमारी कंट्री की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री ने सभी जितने भी टूरिज्म मंत्री हैं स्टेट्स के, यूनियन मिनिस्टर के साथ उन सबको एक एड्रेस किया और कहा कि टूरिज्म देश की इकोनॉमी को कैसे बदल सकता है। लेट मी सी और क्या कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ऐसे वो सा इम्फॉल से लिख रहे हैं, सी द वर्ल्ड, इट्स मोर फैंटास्टिक देन एनी ड्रीम मेड और पेड फॉर इन फैक्ट्रीज, आस्क फॉर नो गारंटीज, asked for no security. Wow. Vidhi ma'am is writing, travel expands the mind and fills the gap. Rosie Chakma, tourism is an essential trade. Julie ma'am, altitude tourism is a relatively new activity for the masses. हमको अभी मास टूरिज्म नहीं चाहिए, हमको सेलेक्टिव टूरिज्म चाहिए, हमको निश टूरिज्म चाहिए, हमको हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट चाहिए, हमको वो लोग चाहिए जो गांव में आए, गांव में ठहरे, गांव की खुशबू ले, वहां की ऑक्सीजन को एंजॉय करें, वहां की ब्यूटी को एंजॉय करें, वहां के लोगों के साथ बैठें, शाम को लोकल फोक डांस, म्यूजिक, कल्चर, लोकल कुजीन, ऑर्गेनिक जो कुछ भी है, they enjoy everything whatsoever is available. So ladies and gentlemen, you got to understand that community जो है उन सबको प्लान करना है, डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, शोकेस करना है, कल्चर को दिखाना भी है और कल्चर को बचाना भी है. When you say you display the culture and you preserve the culture, both will go hand in hand, something very important. अब आप ये देखिए, व्हाट आर द पोटेंशियल डेवलपमेंट बेनिफिट्स जब आप कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म करते हैं. और आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके साथ लेने वाला हूं. सारे यूथ को लगेगा वाओ मजा आ गया, अगली बार हम चल रहे हैं. चित्रा मैम इज ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर दैट, जो केस स्टडी आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. नाउ जूली मैम इज राइटिंग, हैप्पीनेस इज द वे ऑफ ट्रैवल नॉट अ डेस्टिनेशन. ग्रेट. अब आप देखिए डेवलपमेंट एरियाज एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट बेनिफिट्स. सबसे पहले क्या है, जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म से फायदा क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, कल्चरल बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड एजुकेशनल बेनिफिट. ये सब बेनिफिट होते हैं. अब पोटेंशियल डेवलपमेंट बेनिफिट कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इस सारे को आप ध्यान से पढ़िएगा. बट दीज आर द ऑल बेनिफिट्स which you can take into consideration. Wow. Somebody is writing, travel is my therapy. Wow, that's great. Happiness is the way of travel and that is the way we got to take it. आगे आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. तो आज हम दो चीजों में ले रहे हैं. एक है कम्युनिटी, कम्युनिटी टूरिज्म को इनवाइट कर रही है, टूरिस्ट को इनवाइट कर रही है, टूरिस्ट को लेकर आ रहे, एंड दे ऑल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट टूरिज्म. अब आ गया सेकेंड पार्ट. बहुत सारे लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. social means society, societal, and entrepreneurship, you are an entrepreneur, आप कोई काम कर रहे हैं. तो यहां पर क्या है, आपका सोशल मिशन क्या है, आपकी इनोवेशन क्या है, आपका सस्टेनेबल गोल क्या है, आपकी एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज क्या है. उन सब चीजों को जब हम लेकर चलेंगे तो अगर आप एक टिकटेड शो करेंगे ना, तो उसके लिए भी लोग आने को तैयार हो जाएंगे. Now, what are the characteristics of the social एंटरप्रेन्योर? क्या होते हैं उसके कैरेक्टर्स? आपको कैसे पता लगता है कि ये इंसान सोशल एंटरप्रेन्योर है? नंबर 1, प्रैक्टिकलिटी व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, philanthropic bent of mind, faith in teamwork, money management, commitment to improve social welfare, healthy impatience, zeal, the desire to change others, innovation, risk taking, all that you have to take into consideration. Now, ladies and gentlemen, when you come to social entrepreneurs, they need motivation. They need motivation. They got to be inspired. They got to get motivation from others. And you got to understand over here, intrinsic motivation, the desire to change something in the world, the need for constant change, professional development, financial independence, passion, the social role and positive impact in the local community, which we have to take into consideration. Wow.
The journey of 1,000 miles begin with a single step. Yes, that is something very important, which we all have to understand and we have to take it forward. The journey of 1,000 miles begin with a single step. पहला कदम तो उठाओ यारो, मंजिल जरूर मिलेगी. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टारगेट एरियाज, क्या क्या चीजें हो सकती हैं. जो लोग सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जब वो सोचेंगे तो वो ये कहेंगे, we are working for poverty reduction, child rights restoration, access to health care, access to education, access to financial services, women empowerment, community development, microfinancing, sustainable energy resources, and of course, I am focused for community tourism development. थोड़ा और आगे चलते हैं. कम्युनिटी टूरिज्म डेवलपमेंट के अंदर जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और आपके पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि एक तो आपकी कम्युनिटी है और एक आपका टूरिस्ट है. तो कम्युनिटी के पास टूरिस्ट विजिट कर रहा है, जब टूरिस्ट वहां विजिट करेगा तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, लोकल्स को बेनिफिट कैसे होगा, लोकल्स हाउ दे विल बी एनरिच्ड एंड दे विल बी बेनिफिटेड because of the tourist who is visiting that particular city. Now, India's strength is rural community. India still is rural. People are still traveling in villages. You got to understand. And you know, the G20 summit, which is taking place in India, 7th, 8th, and 9th, there was a wonderful program which took place in Rann of Kutch in Gujarat. And the Honorable Union Minister for Tourism, Culture, and Ministry of, the Development of the Northeast region, he discussed over there that, look, tourism can contribute to economic transformation and rural development. So Honorable Minister also talked about it. And then thereafter, they discussed quite a bit onto the rural tourism. So ladies and gentlemen, here comes the pleasant surprise for all of you. आज से हम एक नई स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं. रोजाना के प्रोग्राम के अंदर हम एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप देखिए 30 दिन के बाद आप 30 केस स्टडीज के अंदर माहिर हो जाएंगे. यू विल बिकम एन एक्सपर्ट ऑन 30 केस स्टडीज. और हम कोशिश करेंगे बीच में नई नई चीजें. कल से हम ये भी सोच रहे हैं कुछ एप्स लेकर आएंगे, एडटेक प्लेटफॉर्म्स लेकर आएंगे. वी विल एड ऑन एवरीथिंग न्यू, समथिंग फॉर यू एवरी डे. नाउ टुडे we take a case study of the Zero Festival, which takes place in place called Zero in the state called Arunachal Pradesh. So Doni Polo, that is sun and moon. आज हम लोग चलेंगे Zero Music Festival पर. Take out your dancing shoes and let's tune and let's dance to the tune. Doni Polo. Here is a beautiful city called Zero. You can see the landscape. You can see the depth. What a beautiful place. Zero is the town in the lower Subansiri district in Arunachal Pradesh. ये जो beautiful place है, जो city है, it is surrounded by the majestic mountains. And it welcomes, and यहाँ की जो community, जो tribe है, वो आपतानी है. इनको पढ़ने का बड़ा शौक है. They're very good at studies and they are very good at preserving nature. अगर एक कहीं से पेड़ अगर गलती से उखड़ गया तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाते हैं. That is the way they believe. और ये जो beautiful, जो Zero की जो हमारी ये जो वैली है, इसके अंदर जो charming villages हैं, river है, rice fields हैं, landscape है, उन सब चीजों की जब हम बातचीत करते हैं तो ये जो Zero है, it has been listed as a world heritage site by UNESCO lately. And जो Zero है, it is approximately 1500 meters above the mean sea level. तो 4,500-5,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है. बहुत प्यारी जगह है. और ये देखो, डोनी पोलो की जब हम बातचीत करते हैं तो सन और मून का गॉड है. आप भी हाथ जोड़ दो, मैं भी हाथ जोड़ देता हूं, और सन को भी और मून को हाथ जोड़ के कहते हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमें स्वास्थ्य दीजिए, हमें अच्छे से रखिए. क्योंकि when you take the sun rays in your body early in the morning when you get up, it's that vitamin D is very, very good for us. And similar way, रात का जो चांद है उसके भी बड़े प्यारे प्यारे गाने बने हुए हैं और चांद की अपनी एक अलग से महिमा है. So how to reach Zero Music Festival? बस अब आप पहुंच जाओ
धोनी पोलो एयरपोर्ट भी बन गया है ईटानगर के नजदीक में अरुणाचल में। शू करके फ्लाई कीजिए, धोनी पोलो एयरपोर्ट पहुंचिए, हार्टी वेलकम, और वहां से बाय रोड ट्रैवल कीजिए। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल रोड व्हिच हैज बीन नाउ इट हैज बीन कारपेटेड एंड यू कैन रीच द ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड जीरो। So you require some inner line permits. It depends on, बड़ा easy है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा how to enter अरुणाचल प्रदेश। जो यहाँ का म्यूजिक फेस्टिवल है that is amazing, और यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आते हैं, and these are the two gentlemen legends, those who have started this particular program in 2012. Lots of up and downs, and we are thankful to Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh as well, who supported this particular program. Now the Bobby Hano and Anup Kutti, they took the initiative, they brought the people, and all of them together, they took the journey. और सबसे अच्छी कैसे है, हम कम्युनिटी टूरिज्म की बातचीत कर रहे हैं, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बातचीत कीजिए। जो यहाँ पर सब कुछ यूज होता है, वो जो लोकल हैं वही इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, लोकल मटेरियल यूज करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है आपातानीज का, यहाँ पर दिया है complete this beautiful installation by placing your used zero cups here. ये देखिए ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल, यूज्ड मटेरियल, जैसे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, सिमिलर वे you got a beautiful this particular wall which has been shown, and that is zero. Wow, what a grandeur, what a canvas, what all practice is going on over here is basically they're practicing Zero Festival of Music, made a grand comeback after COVID-19. That is 2020 के अंदर, आपको पता है बहुत बुरा, 2012 में तो उन्होंने शुरू किया, एंड अगर आप देखा जाए तो इन लोगों ने सितंबर 29 से अक्टूबर 2 तक लास्ट ईयर जो प्रोग्राम किया, more than 10,000 people participated in this music festival, and this is becoming something amazing and interesting. और ये देखिए इसके अंदर कंट्री म्यूजिक, लोकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, फोक म्यूजिक, सब चीजों को इन्होंने जोड़ के बहुत अच्छा किया है। एंड दिस इज बेसिकली टू प्रिजर्व योर कल्चर, डिस्प्ले योर कल्चर, एंजॉय। और ये देखिए यहाँ पर 2 स्टेज बनी हुई हैं, एक डोनी, एक पोलो, एक सन, एक मून, एंड दैट इज द वे इट गोज ऑन। एंड इसके अंदर जो लोकल आर्टिशियंस हैं वही इसको बनाते हैं, लोकल बैम्बू यूज होता है। कैन यू इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और जीरो की भी बहुत सारी और मेजर अट्रैक्शंस हैं इस जीरो फेस्टिवल की। और 2023 की अगर हम बात करें तो टैलेंटेड आर्टिस्ट आए, लोकल फूड का अरेंजमेंट हुआ, विलेज की वॉक हुई, वैरायटी ऑफ द रॉक म्यूजिक मिला, पीपल एंजॉयड थॉरोली एज फार एज दिस वाज कंसर्न। It was something fantastic. While making this particular presentation, Chitra ma'am was telling that, Dr. Sharma, I'm keen to go there and see that how it is. Yes, you should travel, and it's a pleasure. Zero Festival is noted to be one of the most eco-friendly festival in India, employing locally sourced material for the infrastructure. That is amazing what we have got. Ye dekhiye, the festival borrows from the Apatani ethos of preserving the nature by using the local available recycled construction material to minimize the waste and carbon footprints. Wow. Can you believe it? How amazing it is. Cutting down on products harmful to the environment. So this is something amazing. This is something very interesting. Opting for traditional building materials, and that all takes place. Clean Zero, Green Zero campaign. And sometimes I feel these words are so rhythmic and similar to what happens in Chandigarh as well. When you talk about it, the serene and the green. And here are Apatanis. Why you should attend the Zero Festival. जब हम इसकी आज केस स्टडी कर रहे हैं, it's a perfect place to connect with yourself amidst the peaceful landscape, intriguing culture and good food. No crazy crowd, and no unlit warehouses, and unforgettable trip to the northeast part of India when you go to Zero in Arunachal Pradesh. You save all that money, and it's a pocket friendly. Enjoy the warm hospitality of the locals,
get to meet and interact with the local tribe, the Apatanis, relish some authentic Northeastern delicacies which they offer in that particular region. With that, ladies and gentlemen, I bring you to the homepage of ICSI web portal. Over here, we just try to share with you that the Woodbury University in USA is giving a wonderful program, and we are also seeing lots of scholarships which are coming from that university. So you can see it over here, people, those are interested, you can download the ebook of ICSI right from here, and you can go on rethinking tourism post-pandemic. Those are from the tourism community, whether you're in education, you're in research, you're a trainer, you're a counselor, you're a student, or you're with the travel trade, wherever you are, you can become the member free of cost for the FEAST, Forum of Educators and Skill Providers of Tourism. It's a free membership for all our brothers and sisters. Those are from travel and tourism. Now, our chamber also offers a wonderful one-day program, Rethinking Education, Skills and Jobs Post-Pandemic. It's an interactive session of 4 hours where we bring in all the new technology in travel and tourism for all of you. And it is something amazing. We will share further details on this after a few days with you. So whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together for tourism. Let's make education and skill relevant for the vocational education of tourism. Tomorrow, we will be having a wonderful topic, sustainable tourism, safe and responsible tourism practices, sustainable tourism. That's going to be the next chapter, chapter 12, that we cover tomorrow. Day after tomorrow, we'll be having skills in tourism, hospitality and aviation industry post-pandemic. What kind of a soft skills, what kind of a life skills, what kind of a technical skills, this we will be talking on 11th. And thereafter, ladies and gentlemen, don't forget, every Saturday, we have got a special program for you from Japan with Venerable Ravi Medankar ji, how you understand जापान का कल्चर क्या है, जापान की भाषा क्या है, जापान की लैंग्वेज को इजी वे में कैसे सीख सकते हैं, ऑल दैट इज कमिंग. और संडे को हम आपको लेकर चलते हैं वुडबरी यूनिवर्सिटी बर्बैंक कैलिफोर्निया 9:30 सुबह मॉर्निंग में, और हम यहाँ पर शेयर करते हैं आपके साथ विद्या से अध्यात्म, विद्या की ओर. शाम को 7 बजे संडे को आपका प्रोग्राम होता है आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल वेलनेस. और उसके बाद संडे को आप लोग एनआरआईज को मिलते हैं रात को 8 बजे एवरी संडे. सो दिस संडे ऑल्सो वी ऑल आर गोइंग टू बी टुगेदर enjoying it. This particular program is going live on YouTube. With this program, we complete 1,840 webinars. This channel is available to you. Should you wish to download any of the video, any program, any point of time, you can just do so from the ICSI India YouTube channel. With these words, ladies and gentlemen, I have come to the end of today's program, and here is the wonderful inspirational lab of ICSI called DIL, Digital Inspirational Lab. आप भी तो चाहते हैं कि आपके पास अच्छी स्किल्स हो, कॉम्पिटेंसीज हो, कैपेबिलिटीज हो, तो आइए हम लोग इकट्ठे चलते हैं इस लैब के माध्यम से एक 4 घंटे की आपकी बहुत अच्छी वर्कशॉप करेंगे. Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. So, ladies and gentlemen, with that, we come to the end of today's webinar.
Tomorrow, we are going to meet once again with the next chapter. And let's take on the journey tomorrow once again of tourism. I'm pretty sure these chapters will be very, very useful. Those of you who are doing tourism as academics, those are into the travel trade, या कोई आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं, टूर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, टूर एक्सकर्शनिस्ट बनना चाहते हैं, our chamber would support you. We are planning to have a digital session soon. 4 घंटे का एक खास प्रोग्राम रखेंगे जिसमें यूथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे वोकेशनल टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन एनहांस योर स्किल्स एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म जर्नी. बहुत जल्द हम आपके लिए वो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. टोटली डिजिटल बेस्ड होगा with lots of apps and lots of edtech platform. मिलते हैं कल रात को 8 बजे. अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल रात को हमसे 8 बजे फिर मिलिएगा. अच्छा, तो हम चलते हैं. थैंक